आई थिंक इन द मोमेंट वाला सीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम्म हम लोगों के लिए ओवरवेलम होना बहुत आसान है, राइट? एंड द मोर जंक वी कंज्यूम, आई थिंक हम्म जंक ही लगता है मेरे को यूजुअली कंटेंट भी, रफली स्पीकिंग. हम्म So the more junk we consume, I think there's a more mental unrest and there's always that चुल अंदर से कि यार कर रहे हो, पीछे तो नहीं रह रहे, पीछे तो नहीं रह रहे, right? That kind of thing. हम्म I think, but on the contrary, I think Mark Manson. balance Hmm. should be that. Hmm. Hmm. That is Hmm. what I feel, right? Agreed, agreed, get it. So yeah, I think then we can just take a good segue to our next topic, which I prepared. So basically, I know it would be contrary for you because you're a founder, but what are your takes on work-life balance? खैर आपकी life में नहीं होगा, I think, because you have a lot of things to है look at too. But yeah, like so, like what do you feel about work-life balance? क्योंकि आजकल ये हम्म हसल ग्राइंड वाला कल्चर, जैसे आप बोलते हो, हम्म लिंक्डइन पे भी आपने आपने बहुत अच्छी बात एक पॉइंट आउट हम्म की कि लिंक्डइन पे सब दिखा रहे हैं मैं ग्राइंड कर रहा हूँ, हाँ ग्राइंड कर रहा हूँ. हालांकि हम्म हमें पता है बेटी चोद की तू रोज सुबह गाली सुनता है अपने बॉस से, राइट? हमें पता है ये चीज. एंड लाइक वो एक सेंस ऑफ वीकनेस लगती है एक तो इस टाइप की पोस्ट, राइट? कि टुडे आई एम हम्म फीलिंग वेरी हैप्पी एंड सैड, पुरानी कंपनी हम्म छोड़ के नई कंपनी जा रहा हूँ. हमें भी पता है बेटी चोद हम्म बड़ा पैकेज मिल रहा था तब गया, राइट? हम्म लेकिन वो ऐसे हम्म क्राफ्ट करते हैं कि नहीं यार बड़ा दुख हो रहा है, वहां हसल नहीं थी, लर्निंग नहीं था, ये सब, राइट? हम्म तो एक तो वन थिंग जस्ट आई वांटेड टू आस्क यू आउट टू क्वेश्चंस कि what is your take on work life balance, and specifically speaking to these people, so what do you feel about this general trend of like just hustling, going on 24/7 for your dreams, right? चाहे खुशी नहीं है जिंदगी में या मतलब उस आपकी internal हाँ sorry. satisfaction नहीं drive कर रहा, right? So if you can like just give your perspective on these two topics, so like what do you feel about it? So like going ahead, I've worked in a startup हाँ earlier जी. as well. So I हम्म. was really bullish on this work, health, and life balance both, right? Because हम्म. what I realized is कि yes, work would stay. Work would never end. How much time you put into it. So हम्म. you need to draw a line somewhere. हम्म. जैसे when I started my हम्म. own organization, हम्म. I used to work every Sunday for like a few months, right? हम्म. Then what I realized is कि you know I wasn't fucking productive on those Sundays. हम्म. Right, I was just going there and yes, working but not as productive. But when I say took a break for like this Sunday, right, so I was more productive than I would be, because now I get a day to go ahead, relax, and be somewhere else, because that's where I get my ideas, my creative juices. So that is हम्म. one thing, right? So work life there is important. Apart from it, every day, like I said, there is one ritual I do, right? I play a game, maybe I do something that I like, right? हम्म. So I've again drawn a line, right? I might हम्म. work, say 12 hours a day, maybe, हाँ जी. but the rest hours that I get, for example, हम्म. at times I like my office timings are about 10 to 8 or 9 sometimes, right? हम्म. कई बार 9 बजे से भी होता है, डिपेंड्स, मतलब होता हम्म. है, अलग अलग हम्म. होता है. So but eventually when I get home now, I'm हम्म. not thinking हम्म. about the कि यार ये करने का है, वो करने का है. No, I just keep my phone away. I just sit down, have food. Like food is, I love food, right? So I meditate over food. Like I taste हम्म. every bite. I don't do anything, no podcast, nothing. I just super unplug whenever I'm eating food. Even in the office when I'm having food for half an hour, I unplug everything. I just concentrate on food. So yep. So that is the हम्म. work-life balance I get. Getting हम्म. home, talking हम्म. to family. At times, हम्म. going ahead, exploring something. Just हम्म. sitting down. Sometimes surfing different things, playing हम्म. games. ठीक है. हम्म. So हम्म. that works, right? Yep. True. So that is my ग्रेट perspective. ग्रेट. आई थिंक इन द मोमेंट वाला सीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि Mm-hmm. हम लोगों के लिए ओवरवेलम होना बहुत आसान है, राइट? एंड द मोर जंक वी कंज्यूम, आई थिंक Mm-hmm. जंक ही लगता है मेरे को यूजुअली कंटेंट भी, रफली स्पीकिंग. Mm-hmm. So the more junk we consume, I think there's a more mental unrest and there's always that चुल अंदर से कि यार कर रहे हो, पीछे तो नहीं रह रहे, पीछे तो नहीं रह रहे, right? That kind of thing. Mm-hmm. I think, but on the contrary, I think Mark Manson talks about it कि weekends also exist for a reason, right? ठीक है, आपने भाई Mm-hmm. 5 दिन 6 दिन जितनी भी मरवा ली, एक दिन just spend with yourself, get that energy Mm-hmm. back, right? क्योंकि we are humans at the end. I think not donkeys and robots जो चूतियों की तरह बस Mm-hmm. hard work किए जा रहे हैं, right? It's I think more Mm-hmm. about optimizing that balance between how smart Mm-hmm. you work with and like how hard you go at it specifically, if Mm-hmm. that makes sense. Yeah. Mm-hmm. Yeah.
So again getting back to हाँ जी. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, Yep. रिसेंटली अभी देखा है तो दिमाग में चल रहा है, राइट? सही तो सही. ना एक चीज मुझे वहां फील हुई, लाइक ठीक है वो फिल्म है तो उसके अंदर कुछ भी पोर्ट्रे करते हैं कई बार, बट हम्म. व्हाट आई फेल्ट इज कि अगर 40 साल बाद मैं पीछे देख रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ मैं हर दिन कुत्तों की तरह लगा पड़ा था, काम ही काम कर रहा था, हम्म. ठीक है, तो आई फील कि यार ठीक है, मैं 40 साल तक तो मैं काम ही किया बस, राइट? अब मैं एंजॉय करूंगा, और वो चीज ना वो वहीं पे वापस आ जाता है, हम जब सोचते हैं कि वो यूटोपिया है मेरा, राइट, वहां हम्म. जाके मैं एंजॉय करूंगा। थिंग्स डजंट वर्क दैट वे, Yep. यू Yep. हैव टू बैलेंस आउट थिंग्स। अब ये थोड़ी है मैं 40 तक काम करता रहूं, हेल्थ को छोड़ दूं तो फिर इवेंचुअली हेल्थ प्रॉब्लम से ही डील कर रहा हूँ। आई हैव सीन पीपल लाइक दैट, Yep. राइट, इन Yep. माय Yep. लाइफ। Yep. 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 सो मे बी मतलब ठीक है, सबकी जर्नी अलग होती है, हाँ कोई जी. ठीक भी रहे 40 तक कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा ये है कि हाँ, कि एवरी डे आई एम डूइंग थिंग्स फॉर समथिंग फॉर माय बॉडी, राइट, समथिंग हम्म. फॉर माय सोल, राइट, समथिंग फॉर माय किचन। तो ये हम्म. तीनों चीजें कर रहा हूँ, Correct. एंड ठीक है, इवेंचुअली what I learned from my mentor, right, he said me one very interesting thing: don't attach yourself to the outcome. You're not the outcome. Hmm. If you know, like, you should be able to see Hmm. yourself as a third person, and the company in the third person, in like two different things they are, right? You are not the company, right? Hmm. So going ahead, you might fail a lot, right, Yep. he said, Yep. but it's just learn, go ahead and don't take it personally. That would sometimes hinder your growth, so that is it, right? ठीक है, Hmm. so Hmm. that was Agreed. something I very think. very Yep. uh, Yep. Yep. I know it's very impactful ऐसे जिस तरह से you have mm, conveyed the essence of it. But हाँ, I think वो भी होता है कि as you rightly said कि mm, like ठीक है 40 तक आप काम कर रहे हो 40-50 साल, like do you even have guarantee कि आप कल जिंदा उठोगे? अगर रात को exactly. हार्ट अटैक आ रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है, Mm, राइट? That's very important, mm, I think, the perspective that we are losing, roughly speaking. mm, And ये also coming to this कि हाँ जी, I think ये outcome attached driven society per se, or let's say driven individuals we are, like particularly to the outcome. I think once we reverse engineer that thinking and just find happiness mm, in the process altogether, so हम देखते हैं कि हमारी लाइफ mm, में कभी और प्रॉब्लम्स नहीं आते, राइट? Our soul set is mm, also sorted, हेल्थ में उतना mm, सीन नहीं आता, खुश है हम mm, आसपास वाले, अपने घर पे गाली गलौच नहीं कर रहे, राइट? क्योंकि यूजुअली mm, ये जो लिंक्डइन पे बात करते हैं हैप्पी एंड सैड एट द सेम mm, टाइम, यही होते हैं जो अपने घर पे आके गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, राइट? क्रिएटिंग अ वेरी mm. नेगेटिव एनवायरनमेंट, या ऑफिस की Negative फ्रस्ट्रेशन घर पे environment. निकाल रहे हैं, घर की फ्रस्ट्रेशन Mm, ऑफिस पे निकाल रहे हैं, राइट? सो mm, yeah, just a follow up question on this. So I'm sure that you might have met such people जो frustrated है life से, right? mm. And specifically you being an engineer, engineers तो are more frustrated than the other people management वगैरह Uh, में. So I don't think so, ठीक है, डिपेंड्स, ठीक है, yep, फुल it हर contextually, yep. जगह हर तरह के लोग मिलेंगे ना तुम्हें। Yep. Agreed. Just for the हम्म, sake of this conversation, I'm just like हम्म, assuming. So basically, how can we, you can say like maybe just deal with such people diplomatically कि let's say कोई आपका boss है, right? At times आप पे frustration निकाल रहा है and आपको चुभती भी है कई बार, right? Like if you're let's say very young in your career, roughly speaking. So how do हम्म, you deal with those instances? How do you go on with it, right? डिपेंड्स। सो बहुत चीजें हैं यार, लाइक इट्स नॉट जस्ट वन आंसर, राइट? Hmm. सो if Hmm. okay, so going ahead, if you can maybe talk to him, right, about what he have done, तो ये तो बहुत बड़ा आइडियलिस्टिक सिनेरियो कि मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा ठीक है और वो मान जाएगा, ऐसा हाँ. होता नहीं है यूजुअली, राइट? Yep. तो Hmm. यूजुअली हम सुन लेते हैं थोड़ा, ठीक है, गाली भी खा लेते हैं, घर चलाना है तो अगर Hmm. तुम इतने ही स्किल्ड हो कि तुम्हें पता है साला 10 जॉब और मिल जाएंगी, Hmm. कोई दिक्कत ही नहीं, घर की बैचलर वाला स्टेटस है, Hmm. ठीक है, तो दिल करे एक आध बार सुना भी सकते हो, क्या दिक्कत है, राइट? Hmm. बट यूजुअली होता नहीं है। व्हाट आई हैव सीन विद पीपल, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज गोइंग अहेड, तो हाँ वो जी. कर नहीं पाते, वो उन्हें डर लगता है। Hmm. तो इसका क्या बताऊं, लाइक क्या ही, लाइक एवरी केस टू केस सिनेरियो, राइट? कई बार Hmm. तुम्हें आगे वाले का भी सिनेरियो समझना पड़ता है कि हो सकता है कि शायद तुम्हारी भी गलती हो उसमें, राइट? Hmm. फ्रस्ट्रेशन ठीक है उसका कई बार तुम्हारी वजह से भी हो सकता है, राइट? उस Hmm. बंदे का
तो बट ये नहीं है कि हाँ वो तुम्हें गलियाए जा रहा है और तुम सुने जा रहे हो, राइट? हाँ तो वो नहीं हाँ, है। इफ इट इज इन सम सिविल मैनर, अगर क्रिटिसिज्म भी समझ आ जाता है यार कौन तरीके से कर रहा है और कौन देने के मूड में है, राइट? हम्म, तो फिर उस हिसाब से करो। ये हम्म, मेरा डिप्लोमेटिक आंसर था भाई, हम्म, द वे, राइट? got it, और अगर लाइक मेरे को करना होता तो अभी तो लाइक है भरोसा स्किल्स पे भी, तो शायद मैं पहले एक दो बार डिप्लोमेटिक रहता, हम्म, शायद इग्नोर भी हम्म, कर देता। हम्म, बट अगर चीजें लगती कि नहीं सही चल रही तो मैं फिर लेनी देनी मैं मजे हम्म, लेके आता पूरे उसके, राइट? सही सही, तो वो चीज़ है, वो डिपेंड करता है। got it, got it.